Assalamu alaikum everyone. So today we are going to study a poem by Emily Dickinson that is entitled as I Am Nobody. It's one of my favorite poems, so I thought I should share this with my viewers. So before reading the text of the poem, we should know about the writer and Emily Dickinson. She is an American poet and she wrote during that period of mid 19th century. And in mid 19th century there was a period of women where they were not acknowledged, they were not having the rights of their works to get published. So her works were not published until 1890s, and after that Dickinson died. That hints at a community of nobodies out there, like they were nobodies because their voice was not being recognized, their voice was not provided any platform that should have a global recognition. So those people just don't make as much noise as all the somebodies who crave attention and admiration. So Emily Dickinson बात करती है कि वो लोग जो कहते हैं कि हमें दुनिया की अटेंशन चाहिए, हमें दुनिया से एडमायर चाहिए, वो somebody बन जाते हैं. वो अपने आप को दुनिया के लिए, दुनिया की नज़र में अच्छा बनाने के लिए, एडमिरेशन हासिल करने के लिए they get themselves attached to some tag, to some position, to some, they adopt some type of character and all that. But वो कहती है कि I don't want the attention of the world, so I am nobody. I have no tag attached to myself. The poem then calls out its readers to say that being humble, withdrawn, shy or private is just fine. Like, you don't have to be appraised, you don't have to, you don't need to have acknowledgement from people. You just have to be peace with yourself. You just have to, if you are private, if you are shy, if you are withdrawn, it doesn't matter, it doesn't affect your abilities. In fact, such a way of life has many virtues of its own. The poem is one of the number of Dickinson poem that questions the value of public admiration. तो एमिली डिकिंसन कहती है कि ये पब्लिक एडमिरेशन के लिए जो सारे लोग लगे हुए हैं इस काम पे कि भाई हमें किस तरीके दुनिया की अटेंशन मिल जाए, ये है क्या. शी डजंट वैल्यू इट, समथिंग विच एलूडेड डिकिंसन इन हर ओन लाइफ. सो इसको हम ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इसमें देख सकते हैं कि एमिली डिकिंसन was a female who was not provided voice. So in a way she is resisting to the powerful communities, powerful power dynamics, and she's saying if she is unable to have a voice of her own, it doesn't matter to her because she is at peace with who she is. So let's come towards the intro of the poem. I Am Nobody, Who Are You is a short but powerful poem that questions the need of attention, seeking instead to highlighting the virtues of anonymity and isolation. So we all need attention, and we are searching for virtue of anonymity. So basically she is talking के attention के लिए आप हर time you are मेकिंग एफर्ट्स, बट इंस्टेड आपको एनोनिमिटी का मतलब है कि अनजान होने का जो विर्चूज़ हैं उसको आप जानें, और आइसोलेशन के विर्चूज़ को आप जानें कि किसी क्राउड का पार्ट हो के आप उस क्राउड जैसे हो जाते हो. बट व्हेन यू आर आइसोलेटेड यू आर जस्ट हैविंग योर ओन आइडेंटिटी. इन एसेंस इट इज़ अ पोएम इन प्रेज ऑफ क्वाइट इंडिविजुअल कंटेम्पलेशन. इंडिविजुअल कंटेम्पलेशन से मुराद है कि इसकी इंडिविजुअल थिंकिंग राइटर की जो है वो शो करती है. द काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय डिकिंसन एंड हर पोएट्री हर सेल्फ. सो लेट्स कम टुवर्ड्स द टेक्स्ट ऑफ पोएम. आई एम नोबडी, हु आर यू. आई एम नोबडी, हु आर यू. मैं कोई नहीं हूँ, बट तुम कौन हो. आर यू नोबडी टू. क्या तुम भी कोई नहीं हो. देन देर इज़ अ पेयर ऑफ अस. कहती कि अगर तुम भी मेरी तरह यू वांट टू लिव लाइक नोबडी, देन वी कैन बी अ पेयर और वी कैन बी टुगेदर. डोंट टेल, दे वुड एडवर्टीज यू नो. वो कहती है कि किसी को ना बताना कि हम कोई नहीं है, वरना दुनिया जो है एडवर्टीज करेगी, यानी दुनिया आपको एक स्पेसिफिक लेबल्स दे देगी.
सो हाउ ड्रीरी टू बी समबडी, वो कहती है कि कितना थका देने वाला प्रोसेस है समबडी हो के रहना, दुनिया के लिए अपने आप को चेंज करना, दुनिया के टैग्स के साथ चलना, पब्लिक अपीयरेंस मेंटेन करना। हाउ पब्लिक लाइक अ फ्रॉग, और ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक जो फ्रॉग है वो एक बरसात के मौसम में बैठा होता है और टर 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 कर रहा होता है ताकि लोग उसको अटेंशन दें। To tell one's name like the livelong June to an admiring bog, तो वो कहती है कि एडमायरिंग बॉग से मुराद है कि ये जो फेम की जो है फेम की जो विश है, इट इज़ लाइक अ मार्श, ये एक दलदल की तरह है जिसके अंदर इंसान धंसता चला जाता है। So the poem begins with an introduction from the speaker who announces themselves as nobody and they ask the identity of addressee, जिससे वो बात कर रही है उससे पूछती क्या तुम भी कोई नहीं हो, तो वो कहता है आई एम, वो कहती है अगर तुम भी कोई नहीं हो then we can be together। The speaker instructs the addressee, यानी जिससे बात कर रही है उसको कहती है कि not to tell anyone about this because other people would make a fuss, which the speaker implies is something the addressee already knows। The speaker then talks about how boring it would be to be a somebody, it would leave nothing private। कहती है अगर सारे somebody बन जाएं, everybody will start to advertise himself for public attention, then there will be nothing private left in everybody's lives। The speaker likens being a somebody to being a frog। Somebody spend their time talking themselves up to anyone who will give them attention। सारी ज़िंदगी लोग इसलिए they are seeking for attention for whole of their life and admire them and comparable to frogs making their noise in a swamp। तो जिस तरह बारिश में वो स्वैम में दलदल में बैठ के जो है वो फ्रॉग आवाज़ें देता रहता है कि टर 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 जस्ट पे अटेंशन टू मी, इसी तरह ये लोग भी हैं। सो बेसिकली राइटर इज़ एडमायरिंग एनोनिमिटी and she is saying that you don't need to be public, you don't need tags to associate yourself with, so that you can have an identity, you can have your identity while being isolated, while being nobody। And thank you for watching my video।